All right, everybody. So you guys can see that it's topic number 7 in your syllabus, which is transformation and vectors, and it is pretty same for O levels and IGCSE. That is the reason attaching a syllabus of only one syllabus, so you can just watch your as well. So there will be no difficult different difference in it. It says that transformation and vectors. Now remember one thing: what is transformation? What is vector? Transformation means change. The meaning of transformation is change, and vector is what it is, the kind of physical quantities it deals with the direction. Just remember that. So I'm explaining syllabus a bit. According to topic 7.1, it is transformation, and we'll do that after vectors. So we'll do that later. We'll be studying vectors first. Okay. So they say that vectors in two dimensions. This is your topic number 1 in topic 7. Describe a translation using a vector represented by x, y, or ab or small a. Add or subtract vectors or multiply a vector by a scalar. Okay. Then they say that magnitude of the vector. Let me change the word. Magnitude of the vector ko I can change length. So it is simply length formula in coordinate geometry. Calculate the magnitude of the vector, which is xy, as this thingy. The magnitudes of the vectors will be denoted by the modulus sign. For example, two straight lines with A is the magnitude of A, or AB is a vector and two straight lines will mean that the magnitude of AB. फिर वेक्टर ज्योमेट्री में क्या कहता है? रिप्रेजेंट वेक्टर्स बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स, use position vectors, use the sum and difference of two or more vectors to express given vector in terms of two coplanar vectors, use vectors to reason and solve geometrical problems. Example includes show that vectors are parallel, show that 3 points are collinear, solve vector problem involving ratio and similarity. So let me proceed the show. That was according to the Cambridge Examiner. Now let's start the topic my way. Okay, I'm going to sum up the topic inshallah in today's lesson. So please pay attention, everybody. First of all, let me write here vectors. Please start writing. लिखना शुरू कर दें. Vector means vectors. And what is the date today? Anyone? 28? जी Yes, सर। sir. It's 28 Feb 2025. So vectors. Beta, we know that before discussing vectors, we know that in physics you have studied about the physical quantities. Vectors have vectors have magnitude, magnitude as well as directions. I'm making a very good notes for all of you, so please follow that. Okay, as well as it has a direction. Then what vectors are? They are represented by an arrow. Vectors are represented. Maramin लिखना शुरू करें बेटा. अस्सलाम वालेकुम Represented. सर। जी सर। Walaikum assalam. They are represented by an arrow. They are represented by an arrow like this, or small letters. Small letters. Like for example, they'll say that AB is a vector with an arrow or small a. They can use this kind of wording in paper. Now, what a vector is? Vector is vector. How vector it looks? Vector is bracket x and y. Remember, it's not a fraction. Don't put a line below x. It's not a fraction. Then we know that what is xy? We know that xy is x-axis and y-axis. This is y-axis. Sorry, this is x-axis, x-axis, and this is y-axis. And we know that we have specific coordinates here, there, here, there. We know that this is my first quadrant. We studied this thing in coordinate geometry. This area is my second quadrant. This area is my third quadrant.
This area is my fourth quadrant. We know that in the first region, x, y both are positive, but in the second quadrant, x is negative, but y is positive. In the third quadrant, x is negative, y is also negative, and in the fourth quadrant, x is positive, but y is negative. Now, we need to understand this topic in a very different dimension. So let me add a page here with a square paper. Okay. So as I said earlier, that for example, as I said earlier, that vector is represented by this thing, bracket x and y. So beta, remember one thing, when x is positive, we go right. When x is negative, we go left. When y is positive, we go up. When y is negative, we go down. So this thing will clear 90% of the vector. Example. Example is, like for example, let me draw an arrow here. Vadan, can you hear me, beta? Yes, sir. So please pay attention. Avinash, you can see one thing that this is vector AB. Yes, sir. Let me name this point A and B. So these points are vector A and B. So now remember one thing. This A point of the vector is called the tail of the vector, and this point of the vector is called the head of the vector. This is what head and tail. So इसको tail बोलते हैं और इसको head बोलते हैं. ठीक है? Now, now once we have this idea, now once we have this idea, so what I can do is I can just calculate that what that vector is. तो ये vector क्या चीज है? So first of all, खुशी, you can see one thing, that A to B vector, it can be written as AB with an arrow equals to bracket. Now, Sim, you can see one thing. If I want to find out AB vector, now I have to start from A and I have to reach point B. So I have to travel towards right, this much right, and then I have to go upwards like this. So how much right I came? I came towards right side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's 10 right. And 1, 2, 3, 4, 5. And it is 5 up. So how I write 10 right and 5 up? 10 right would be plus 10 and 5 up is plus 5. That's how we write the vector. Then you can see one thing here. Like for example, in the example number 2, the vector is written in front Sir, of sir, you. can you please go up, sir? Please. Yeah, I'm please. taking notes. Okay, okay. Now you can see that in example number 2. In example number 2, I'm going to make a vector here of my choice and I am going to name that vector. I hope you guys are done. Yes, sir, I'm done. Okay. I'm done. All right, thanks. Better please keep your pace with me, okay? Now you can see that these 2 points are here. Alina, I am joining these 2 lines and I'm going to name them PQ. Agree? Now the examiner is saying, what is PQ vector? So PQ vector means PQ vector, PQ vector means in daily life, direction of Q from P. So start your car from P and travel to Q and travel to Q. Now, Sim, I have to go, I have to go somewhere towards right, agree? If I want to travel to Q, agree? And then I have to Wait, sir. come downwards. Now you can see one thing, how much I came towards right.
I came 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right, Ramin? It's 9, right? And it is 1, 2, 3 down. So I'm going to write -3 now because it is down. Understood, everybody, or not? सर Yes. हम लोग पी को नीचे नहीं लेकर जा सकते लाइक पी नीचे और फिर राइट की तरफ एक ही बात है ना बेटा, आप यहाँ से आ जाओ, आप 3 आ जाओ तो -3 तब भी आएगा और +9 तब भी आएगा। ओके शर्त ये हो जाएगी कि आप राइट लेफ्ट पहले नहीं ले रहे, आप अप एंड डाउन पहले ले रहे हैं। अंडरस्टूड? तो सर आंसर में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल करता हूँ। आई एम टेकिंग रामीन्स यमुना's क्वेश्चन राइट नाउ। शी इज सेइंग दैट सर what if I start from P and I travel to Q। तो जरा मुझे देखिएगा, क्या नाम है, यमुना, I'm gonna take 3 steps toward down and I'm taking 9 steps towards right now। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यमुना, ये है वो पॉइंट Q। अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो क्या ये ऊपर वाले की तरह बना है? यस सर It's same thing। Okay, जी सर ओके you go down first and then right first, so it's the same thing। लिखने का तरीका क्या है? It's PQ vector which is equals to +9 and -3। Now there is also a point, what if what if what if you travel from Q to P, so everything remains same, just change the signs, just change the change the signs। now beta, एक चीज अंडरस्टैंड करें। Ramin, can you hear me? जी सर Beta, PQ vector is 9 and -3, so QP vector would be the same digits but with change signs only। Understood? जी सर So now check, if I start my car from Q, I have to go left first and then go up। So when I go left, I will be using minus sign, and when I go up, I will be using plus sign। Understood? Understood? ये जी सर Okay, सर that's good। Now, for example, सर मैं एक बात पूछ सकता हूँ? जी जी पूछें, बिल्कुल बिल्कुल पूछें। सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज है ना, हम्म राइट एक्स जब राइट पे जाता है तो पॉजिटिव होता है, हम्म जब लेफ्ट पे जाता है तो नेगेटिव होता है। इस तरह वाई भी जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव होता है और नीचे जाता है तो हम्म नेगेटिव। तो सर ये वो गुड, क्वाड्रेंट्स के हिसाब से ही है ना, जिस तरह ग्राफ एक्स एक्सिस का यस, राइट पे जाता है तो वो बिल्कुल पॉजिटिव टर्म्स लेता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, सेम सेम। ओके सर। गुड लिंकेज। सर ठीक है। यप। सर ये जो सर है ना, मतलब ये 9 बाय, इसको कैसे बोलेंगे? 9/3 ये फ्रैक्शन में है सर, ये किस तरह है? नहीं, इसको 9/3 नहीं बोलते, इसको 9-3 बोलते हैं। वेक्टर बस ऐसे यही भी तरह ही सिंगल बोलते हैं डिजिट सर। ऐसे ही बोलते हैं। एक्स आपने पहले तो बोलना है, सर मैंने बोलेंगे। इसको इस तरह साइड पे क्यों नहीं लिख सकते? नहीं बेटा, वो कोऑर्डिनेट हो जाता है फिर। और इसलिए डिफरेंस है ना, क्योंकि हमने इसीलिए, इस हाँ जी, इसीलिए ऊपर नीचे लिखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको साइड पे लिखें तो कोऑर्डिनेट लगेगा फिर। ओके एवरीबॉडी, प्लीज पे अटेंशन। आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग हियर, सो I hope things will get easier। So it's 1, that's 2, that's 3, that's 4, this is also 1 2 3 4। Now Ramin, this is 2 4 and 6, this is -2, -4 and -6। We know that everybody that this region is origin, and this is x-axis and that is y-axis। So now beta, for example, this is point A, this is point A, and this is point B। So beta सर थर्ड AB क्वाड्रेंट vector नेगेटिव नहीं होगा हो ना, बट हाँ, यस, सॉरी, ये मैंने माइनस के साइन नहीं लगाए। थैंक यू। ओके यमुना, व्हाट इज यस AB vector? AB vector
सर इसको ए बी लाइन बनाएंगे और काउंट Very good. करेंगे ना. So first of all, first step is join points. Okay. First step is join points. So we will be joining the points with the help of scale, something like that. Understood? Yes. Okay. Once we are done, then we have to count boxes now. But remember one thing, Yamna. You remember one thing, that two boxes, it means one value now. Okay. So it's Yes. 1, 2, 3, 4, 5, right? This is how much right now? So this is how much, right, everybody? 5. See, it's 5, right? And Ramin, this is how much down? -1, No, 1, it's -2. 2 down. 2, 2, 2, -2. 2 down. -2 down, sir. Yes, because look at the y-axis. Okay, so it's 5 towards right and -2. Okay, Ramin, what would be the vector BA? -5 plus 2. Very good. Same vector, just change signs. Understood? Understood, everybody, or not? Yes, Now, sir. let's discuss what is magnitude of the vector. Magnitude of a vector. So what is magnitude of the vector? Magnitude of the vector represented by straight lines. Represented by these two straight. Sir, Yep. that's also called as modulus, right? Yeah. Straight lines. Straight lines. For example, AB is a vector and there are two lines like that. So it means that you are bound to give the magnitude. The formula would be square root of x square plus y square, which is the practical application of trigonometry. And I told you, if you have the base and perpendicular, you can find out the hypotenuse by using Pythagoras theorem. So now we have AB vector. So now magnitude is a length. It cannot be negative. It is equals to square root x square plus y square. Yamna, the value of x is 5. 5 square plus -2 square. तो यमुना आपको पता है कि स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस -2 square is +4, which is square root 29. And square root 29 is how much? It's 5 point something. So 5 point how much? 5.38. 5.38 units, because it's a length and we don't know that which length unit is used in this graph. Understood, everybody, or not? Yes, सर sir. ये तो वो ऊपर उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम में वो जो ट्रायंगल बनाते हैं उसका जो Yes. लेंथ वही चीज है ना सर? Yes, ये तो बस ये विदाउट बाजू का क्वेश्चन में बगैर डायग्राम के आता है ना. तो अच्छा सर. एग्जामिनर आपको क्वेश्चन, एग्जामिनर कैन गिव यू अ क्वेश्चन, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन. एग्जाम स्टाइल. सर ये मैग्नीट्यूड हमेशा इस तरह फाइंड आउट करेंगे, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दूं. तो जरा देखें एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज, वदान, small a is equals to 2 3, small b is equals to -5 and 6, small c is equals to -2 -2. Understood? Part 1, it says a plus b. So just write a 2 3 plus b -5 and 6. Now these two are x and these two are y's. So add x with x and y with y. So it would be 2 plus -5 and Mohit 3 plus 6. So the answer would be 2 minus 5 is -3 and 3 plus 6 is 9. Second part, examiner is saying A with two straight lines. Examiner will not say find this magnitude. You have to understand, okay, examiner is talking about the magnitude. So it is equals to square root of x square plus y square. Now, Mohit, you can see one thing, that the value of x is 2 and the value of y is 3. And because they are talking about a, so that is the reason I'm picking values from here. So a magnitude would be equals to square root 2 square plus 3 square. And 2 square is what? 2 square is 4 plus 9. And 4 plus 9 is what? It's square root 13.
So we got the idea that magnitude of A is square root 13, which is approximately equals to how much? 3 point something, 3.60. 3.60 units. We don't know कि centimeter है minute meter है क्या हमें ये नहीं पता. Understood everybody or not? Okay, Yes, sir. so let's do the third part now. Third part is multiplying scalar with vector. Scalar with vector. Now, Vadan, what I'm gonna do is I'm gonna write 2a. What? 2a. So what that 2a is, you have to just multiply 2 with a vector, which is 2, 3. So now multiply 2 with x and y, both of them. It is not a fraction. You have to multiply with both of them. So 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So 2a vector is in front of you. Look at the requirement number 4. 2a minus b. Yamna, 2a minus b. 2 a की वैल्यू है 2 3 माइनस b की वैल्यू है क्वेश्चन में लिखी थी -5 and 6. क्या लिखा था बेटा? -5 and 6. -5. So 2 2s are 4, 2 3s are 6. ब्रैकेट बंद. माइनस -5 and 6. अब x को x से माइनस करो और y को y से. सो हो जाएगा 4 माइनस इंटू -5 and 6 minus 6. So इसका मतलब क्या हुआ कि 4 plus 5 is 9 and 6 minus 6 is 0. So that is what your final answer is. Understood everybody or not? Agree? Yes, sir. But All right. multiplying scalar with vector, I'm still a bit confused. Okay, so let's do one more example here. Yes. So this is example number 5. It says that 3a plus 6b. So 3 times a plus 6 times b. Understood? Value of a in the question is 2, 3. So it's 2 and 3, and value of b in the question is -5 and 6. It's -5 and 6. Now, Avinash, we have to multiply this 3 with both of them, okay? And this Okay. 6 with both of them, because it is not a fraction, it is a vector. The answer would be 6, 9 plus 6 5s are -30 and 6 6 are 36. 36. Now add them. 6 plus -30 and 6, sorry, it's 9. 9 plus 36. Close them in the bracket. Now Muid, beta, 6 minus 30 is -24. Faiza, 36 plus 9 is 45. Understood, bacha? Yes, sir. Alina, sir. समझ आया बेटा? Yes, sir. Arom, Hadi, Huria, Saim, Omar, Zaria. जी सर. बेटा बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, ये आपको डिफिकल्ट ना लगे. ठीक है? Yes, Let's sir. see. Let's see. Question is, Vadan, can you hear me, beta? A is -2, Yes, 3, yes, I can hear you. and vector AB is -5 and 6. Find coordinates of B. Vadan, क्या मतलब हुआ है क्वेश्चन का, जरा पढ़िएगा. A vector -2, 3 and vector AB. बेटा आपने गलत पढ़ा है. A is not a A vector, it's a minus coordinate. A coordinates -2, 3 and vector AB is equal to -5, 6. Find the coordinates of AB. Find the Okay. coordinates of B. Okay. So Moeed, coordinate of A is given. Agree, Moeed? Yes, sir. And I have the moment as well. So Moeed, I am standing at -2. Any problem? No, sir. According to the question, it says that Vadan, that it is 5 left. Do you agree with me or not? And this says 6 up. Agree? Yes. Agree, Vadan? Yes, sir. So beta, if I take 5 left from -2, so if I take 5 left from -2,
So it would be -7. Do you agree with me or not? Yes. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Ramin? Yes, sir. Ramin, सर मुझे नहीं समझ आई। इसीलिए कह रहा हूँ जरा प्लीज सब गौर करें. फिर मुझे भी नहीं समझ आई। I'm starting one more time. So are you guys ready? Yes sir. All right. So now please pay attention. Yamna, Ramin, I'm standing at -2. Any problem? No sir. According to the question, my question says goes 5 left. Agree or not? Yes sir. If I take 5 left from -2, -3, -4, -5, -6, -7. Understood? Yes sir. समझ आ गया? जी sir. It means that B has a coordinate. X coordinate is -7. Understood? सर ये कैसे माइनस? बेटा अभी मैंने थोड़ा सा डेमो दिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा प्लीज अंडरस्टैंड करना शुरू करें. Repeating one more time, so please pay attention everybody. Okay, Omar, this is me standing at -2. Any problem? नो सर. Question says 5 left. तो बेटा -2 से जब लेफ्ट पे जाऊंगा तो -3 आएगा. आएगा सर. तो 5 लेफ्ट लेने हैं, तो अभी हमने लिया -3 1, -4 2, -5 3, -6 4 and -7 5 left. Any problem? नो सर. So it सर means that लेकिन एक मिनट लगता है, -2। खामोश बोले मत प्लीज. It means that x coordinate of B is -7. Now I am going back to 3 now. According to this, I am standing at 3. Ramin, I am at Y, I am at 3. But question says goes 6 up. Goes what? 6 up. So if I take 6 up from 3, so I will be at 9 or not? Yes or no? Yes, sir. Ramin, will I will be at 9 or not if I go 6 jumps from 3? सर मुझे समझ सर 3 से 6 तक जाने के लिए तो हमें 3 बेटा जंप्स लेने मैं पड़ेंगे ना, 9 कैसे? आप मेरी बात सुने प्लीज. आप 3 पे खड़ी हैं, एग्री? ये y एक्सिस पे 3 है, अंडरस्टूड? जी। आप जब 6 जंप्स ऊपर जाएंगे तो 3 पर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो 3 + 6 करेंगी तो 9 आता है. जी। ओके, अब ये बस समझ गई तो बस 1 मिनट जरा सब्र कर जाओ, अभी बोलना नहीं, ठीक है? अब मैं थोड़ा और क्लियर करूंगा, ठीक है? सो सब गौर करें प्लीज, और करें, समझ आ जाएगी 1 मिनट के अंदर ही. जरा रामीन, -7 तक है और a की वैल्यू -2 है. ओके, a की वैल्यू -2 है, सो यहाँ पे आ गया -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बेटा मैं आप लोगों का थोड़ा लेवल अप कर रहा हूँ, तो काइंडली प्लीज जरा थोड़ा पेशेंस रखें. ऑलराइट, अरुण बेटा, कैन यू हियर मी? The coordinate of A was given in the question, which was -2 and 3. So according to this thingy, -2 and 3 is this point. Agree, Ramin? Agree, Ramin? जी सर। Okay. Vector is -5 and 6. Vector A is -5 and 6. This is AB vector. Okay. So Ramin, I got the idea that -5 means 5 left. Agree or not? Yes or no? जी सर। And +6 means 6 up. 3 and 6 up. Understood? Ramin, can you tell me what is the coordinate here? सर -7 और 9। क्या ये हमने पहले लिखा था? जी। विदाउट ग्राफ लिखा था. Let's try one question more. Question.
The coordinate of point P is 2 and 6 and ये PQ. क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? बेटा ये 2-3 नंबर के होता है, 2 and -3. Okay. Mohit, जी सर। find coordinates of Q. Find coordinates of Q। Q. अब बेटा Q के कोऑर्डिनेट, ये P का कोऑर्डिनेट है 2 6, एग्री? तो इससे Q, ये PQ को माइनस कर देंगे। ओके, अब मेरा बेटा जरा अंडरस्टैंड करें प्लीज। मोहित, जी जी सर। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है? मोमेंट क्या कह रही है? व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द मोमेंट, प्लीज टेल मी। उधर 2 है सर, मतलब तो कितने स्टेप्स हमें आगे जाना होगा कि 2 हो? आगे क्या क्या मतलब, राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? बताओ ना, 2 का क्या मतलब है? राइट। राइट सर। यस, 2 का मतलब है 2 राइट। और जी। -3 का क्या मतलब है? लेफ्ट। वेरी गुड, इट्स 3 नहीं, डाउन। हाँ। इट्स 3 डाउन, ठीक है? जी। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करें बेटा रामीन, ये कोऑर्डिनेट मेरा x है, ये y है, अंडरस्टूड? जी सर। 2 + 2 is 4 or not? जी सर। 6 - 3 is 3 or not? जी। समझ आया? आ गया। गुड। अब देखें जी, आई एम स्टैंडिंग एट 2, इफ आई टेक 2 राइट्स आई एम एट 4, ओके हैप्पीली। आई एम स्टैंडिंग एट 6, if I go 3 down I am at 3 then again. Understood, Avinash? Yes, sir. Understood. Can I trick you a bit? Sure. Why not? A is -1 -6 and BA vector is 2 and -5. What are the coordinates of B? सर Coordinates ये जो is ए two comma खामोश minus खामोश। two जी, comma minus five. can you please repeat? 2 comma -5, sir. How? So AB is BA. Yes, that's the trick now. Okay. Okay. Sorry. So it So means that I have the coordinate of A. Yamna, can you hear me, bacha? Yes, sir. We know that, as we know, 2 right Rameen, and 5 down. yes, but as we know that we have point A available, I don't need BA vector, I need AB vector. Understood? As we know that AB vector would be the same but change in sign. Agree or not? This is star thingy. Understood, Yamna? Yes, sir. Okay, Yamna, you are at -1. What is the value of x? It is 2 right. Beta, what is the value of x? जरा ये देखो ये क्या लिखी है? -2, sorry. Yes. So -1 से 2 लेफ्ट ले लें तो -3 आता है. Agree or not? Yes, sir. और -6 से 5 अप जाओ तो -1 आएगा. Agree or not? Yes, sir. Because it is -6 + 5 -1. साइम समझ आया? बिल्कुल सर। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन बहुत आसान है ये चैप्टर। जी सर। और भी ये चैप्टर आसान है। तैयबा, कैन यू हियर मी बेटा? जी सर। Okay, Taiba, question for you. Coordinate of x is -4 + 2. Yx is 5 - 3. Find coordinates of y. So y coordinate would be bracket and this comma. All right. So Taiba, what we do first? सर एक्स वाई निकालने के लिए साइंस ऑपोजिट करते हैं वाई एक्स का। Okay. So first of all, हमें x y vector चाहिए. I don't need y x. So it's the same vector with opposite signs. Understood? Okay.
So now Tayyiba, do the appropriate movement. -4 plus -5 is what? -9. Agree? And 2 plus 3 is what? It's 5. Understood? Beta, everybody? Yes, sir. Easy हो गया? ऐसा कोई Mm. स्टूडेंट जिसको ये समझ नहीं आया हो, क्योंकि आगे पास पेपर में क्वेश्चंस होंगे फिर। No, sir. I fully have understood it. It's अच्छा very सर, easy. तो हम इसको डायरेक्ट ऐड करके तो कर सकते हैं, हाँ, लेकिन मतलब आपने कोऑर्डिनेट फाइंड कॉन्सेप्ट के करने के जरिए लिए। करना है, रट्टा नहीं। मैंने बहुत सारे स्कूल्स में देखा है, वो सर एक कहते हैं और कि ए बी क्वेश्चन था। वेक्टर को बी ए के साथ ऐड करें तो रिजल्टेंट आता है, तो ये आता है, तो वो जी आता है। सर। वो रट्टा होता है। जब रट्टा लगाते हैं तो फिर आपसे एक क्वेश्चन होगा, अगले में फंस जाएंगे आप। ठीक है, जी सर जी एक ठीक। और कराएं। चलें एक और कराते हैं। उमर आप ट्राई करें, ठीक है। आपको आ गया तो मतलब सबको आ गया है, ठीक है। C is -1 -7. बेटा सी डी वेक्टर इज -3 -2। उमर डी के कोऑर्डिनेट बताओ। डी के -3 और -2। बेटा आप ये जरा गौर करें प्लीज। You have C coordinate available, you have CD vector available. Tell me what are the coordinates of D? -2 सर। रट्टा नहीं लगाएं, आपको मैं बार बार कह रहा हूं। इट्स -1। -1 में से -3, सो -1 प्लस -3 इज -4 आता है। फिर -7 आपका y कोऑर्डिनेट है, प्लस -2 -2 इज -9 आता है। रट्टा मत लगाओ बेटा। सही है। रटा बेटा शाम तक चलता है, इससे ज्यादा नहीं। सर आई सजेस्ट ग्राफ लाइंस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो बेटा ये लाइंस मैंने लगाई हैं सही कि नहीं? साइम, अलीना, फायजा, हादी, हूरिया, हमजा, तैमूर, बेटा सबको समझ आ रही है कि नहीं? यस Yes, sir. किसी को समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लें। सर वैसे प्लस करना होता है। जस्ट प्लस करना है, लेकिन वेक्टर ठीक होना चाहिए। आपने उम्र देखा है? यू सॉ दिस दैट x coordinate was given but yx was given, so that is the reason we changed yx into xy first. फिर हमने क्या किया है? सिंपल, -4 plus -5, 2 plus 3, that's the answer. सर Yep. सर, अगर यहाँ पे हमारे पास डी सी वेक्टर होता तो हम पहले साइन चेंज करते हैं ना। पहले हम सीधी निकालते। सर ये अंडरस्टूड? XY उल्टा नहीं होता नहीं 3 और सर, 5। मतलब मैं कह रही उल्टा हूँ कि नहीं होता, अगर खाली यहाँ पे साइन डी चेंज सी होते हैं। होता तो, जी यमुना आप क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ ना कि यहाँ पे अगर डी सी वेक्टर होता तो हम पहले साइन हाँ चेंज जी, करते ना। हम पहले अगर ये डीसी होता तो आई वुड हैव फाउंड सी डी फर्स्ट। एग्री? यस सर। आई होप इट्स क्लियर नाउ। समझ आया? यस सर। Okay, let's go. Like for example, now graphically. Okay, this is point A, and this is, let's say, this is point B, and this is point C. But a point A is small a, and point B is small b. So examiner is asking you find AC. Now we do not have any values here, so I know that. So write proper shorter root. So write proper shorter route. आपने सबसे पहले proper shorter route लिखना है. So I started my car from A. I want to travel till C. So it means that according to the road, I have to go to A to B and then B to C. Agree everybody or not? Yes or no? यस सर। So it means that AB is small a and BC is small b. So vector AC is A plus B. That is the answer.
Understood everybody or not? Yes or no? तो सर हम इसके लिए काउंट नहीं करेंगे लाइन वगैरह? नहीं, इसके लिए तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो टेढ़ी मेढ़ी लगी होती है ना बगैर ग्रिड के। ओके ठीक है। Got it? Got it? यस सर। Yes. Let me add a page here with an empty page लेता हूँ अब जरा। अब ग्राफिकली नहीं चाहिए क्योंकि अब आपने मुझे कहा है कि तो empty पेज लेते हैं अभी। जी यमुना, this यस is सर। my place, this is McDonald's, this is KFC, agree, and this is school. Let's say, let me connect all of them. Any problem, anyone? नो Omar, any problem? No, sir. Okay, so this is, for example, 2a plus b. This is, arrow is going this way, so it's 6c, and this is, for example, 3f. So the examiner is asking you the question, find as. Okay, as is what? Start your car from A. This is your starting point, Arom. And this S is your ending point. Ramin, understood? जी सर। So E to S. So I have to start my car from A. I will travel till M. Then I will travel till M to K, KFC, and then from KFC to the school. All right. डायरेक्ट नहीं होता? बेटा डायरेक्ट अवेलेबल है आपको? सर इसमें डायरेक्शन चेंज है तो साइन चेंज होगा ना? अभी अभी सबर तो करें जरा थोड़ा सा। उमर, ये डायरेक्ट कैसे चला जाऊं बेटा? डायरेक्ट लाइन नहीं लगी हुई, कैसे चला जाऊं? और लाइन अगर मैं लगा भी दूं उमर, आई डू नॉट हैव एनीथिंग हियर, मेरे पास कुछ लिखा ही नहीं है इधर। अंडरस्टूड? सही। ओके, नाउ उमर, a to s is equals to am. am क्या है उमर? AM 2A plus B. It is 2a plus b. Okay, mk क्या है? MK 6C. No, minus 6c, रिवर्स आ रही है डायरेक्शन। कैन यू सी दैट? आप वहां से आ रहे हैं, वेक्टर इज गोइंग दिस वे, सो दैट इज द रीजन यू विल राइट द नेगेटिव साइन। अंडरस्टूड? साइन को चेंज करना है। अगर ये माइनस 6 होता मैं प्लस 6 लिखता, ठीक है? ठीक है सर। एंड व्हाट इज के एस? K is 3F. प्लस 3f आएगा, एग्री? सही। So यमुना, as vector मतलब my place to school is 2a plus b minus 6c plus 3f. Nothing is like term, so this is my final answer for this question. Understood or not? यस सर। समझ आया बेटा? थोड़ा सा बेसिक समझाया है, थोड़ा सा आइडिया डेवलप किया है, आपका ग्राउंड डेवलप किया है ताकि कल मैं पढ़ा सकूं, कल क्लास होगी, ठीक है? ओके सर। अंडरस्टूड? यस। एनी प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. ओके, क्या नाम है, रामीन बेटा, समझ आया? जी सर। देखें आए जरा वेक्टर्स के ऊपर एक छोटी सी वर्कशीट करते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया भी क्लियर हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी कि कितना समझ आया। ऑलराइट, चलें जी। They say that in the diagram OBDE and OAFG are parallelograms. Okay, so OBDE, OBD, and where is E? Yeah, okay, that's E. It's a parallelogram. And OAFG, okay, where is OAFG? OAFG, okay, this is also a parallelogram. Any problem, anyone? These two are parallelograms, so now I'm going to erase it because अब मैंने समझा दिया आपको. Okay,
According to the examiner, express. Okay, now let me write this thing. They say that B is the midpoint of OG. B is the midpoint of OG. So, Simon, I can say that this other piece is also small b because this is written small b. So, this will also be small b, and this will also be small b, and this will also be small b. Agree or not? And जी Yes. सर. O to A is small a. So, I can say that this is small a, and this is also small a, and this is also small a, and this is also small a. Agree or not? Express in terms of A and B. Give your answer in the simplest form, OC vector. Okay. Start your car from O, travel till C. You have two choices, OA, AC, first choice. OB, BC, your choice. So O to C would be O to B plus B to C. Ramin, अगर मैं इन दोनों को remove कर दूं तो क्या, can you see that OC is there? जी सर. It means that you wrote the correct route, okay? So O to जी. B is plus B and B to C is plus A. So B plus A is the answer. Understood, Rami? जी सर. Now they are saying BA vector. सर Now we कैसे are supposed to ये find out स्मॉल बी BA. कैसा है? जी बेटा, इसके ऊपर वाली की समझ नहीं आई, ये लास्ट पार्ट जो है. बेटा OB plus B है ना, सर है. और B to C plus A है, तो B plus A हुआ OC. तो स्मॉल स्मॉल क्यों लिखा है? स्मॉल बी और स्मॉल ए. वो क्वेश्चन में गिवन है ना बेटा कि OA स्मॉल a के बराबर है और OB स्मॉल b के. ऑलराइट, अब B to A, B से गाड़ी स्टार्ट करें A तक जाएं. व्हाट इज द रूट यमुना? B to A. Sir, it's vector BC and CA vector. Very good. Vector BC plus CA. BC is what? It's A plus B It's plus A, and CA is plus B. minus B. You are going from C to A. Oh yes, direction change. Okay. Yes, direction change हो गई. Be careful with the direction. All right. तैयबा, बेटा DF बताओ. D to F. तैयबा, Sir, D to C or C to F? very good. D to C plus C to F. D to C क्या है? Negative A Very good. And CF? plus B. Very good. So this is minus A plus B. Saim, can you hear me? Can you turn on your mic for a while? Can you turn on your mic? All right, Temur, turn on your mic, please. They say that show EG and DF are parallel. Okay, let's show. Let's find EG first. So, Temur, what is EG? Hadi? Hadi, what is E to G? E to G क्या है बेटा? Anyone? नेगेटिव ए. माइनस What? 2A plus 2B. बेटा नहीं ना, आप मुझे रूट बताएं, आंसर नहीं. सर EO नेगेटिव ए. plus OG. नहीं, आंसर डायरेक्ट रूट नहीं. ई से जी तक जाना है. इसका मतलब क्या है उमर? ई से गाड़ी स्टार्ट करके जी पे आना है. पूरा सर रास्ता बताओ E to मुझे. D. नेगेटिव ए. नेगेटिव ए. बेटा EA फिर plus आंसर बता रहे हैं. प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट टेल मी द आंसर्स. आई नो आंसर्स बेटर देन यू गाइस. E to D, सर मैं बता दूं. यस, ऐसे. ई टू डी, D से F, डी टू एफ, F to G, एफ टू जी. इट्स द शॉर्टर पॉसिबल रूट. सो ई टू डी इज व्हाट मुइज? small b, वेरी गुड. डी एफ क्या है? DF तो लिखा ही नहीं है. पिछले पार्ट में फाइंड किया आपने. हाँ, माइनस ए प्लस बी. आपने पिछले फाइंड में फाइंड किया ना डी एफ.
जी जी And what is FG? ए सोचो, FG, F से G, मोइज देखो, नेगेटिव ए। it's negative A, not positive A, ठीक है? So जी B minus A, okay, B plus B is 2B, or minus A is minus 2A, okay, that's EG. Hamza Amjad, I got EG. Let's find out DF. And we have the value of DF, which is minus A plus B. Agree or not? Hamza Amjad, सर ये तो वहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता था। कहाँ से? ये क्वेश्चन से आपने इतना लंबा क्यों किया? बेटा मैं पागल हूँ, इसलिए। आपने नंबर लेने हैं एग्जामिनर से कि नहीं? ये लेने। हाँ जी। अब वो एग्जामिनर कहता है कि इसको शो करें। Hadi, you can see that it's minus A plus B. I'm talking about DF. And EG is minus 2A plus 2B. Yamna, can you see that this is minus A and this is also minus A? This is Yes, plus B. sir. This is also plus B. Both have same signs or not? Yes, sir. Same signs means same signs means that they are parallel. That they are parallel. ये क्या है बेटा? Parallel है. Understood? Yes, Faiza, sir. Alina, Arom, Yes, sir. is this clear? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जरा ट्राई कीजिएगा आप लोग खुद ही। इंशाल्लाह कल जो है ना वेक्टर्स के ऊपर बड़ी प्यारी डिस्कशंस और भी करेंगे। आज मैंने सिर्फ टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी समझ आ गई होगी। ज्यादातर बच्चों को समझ आ गई है। जिनको अभी समझ ना आए तो कल क्लास से पहले ये रिकॉर्डिंग दोबारा देखना। कल की क्लास की उसी को समझ आएगी जिसको आज के लेसन की समझ आई है। अंडरस्टूड? अगर कोई पॉइंट रह गया है तो एक दफा रिकॉर्डिंग देख के पहले ही कर लेना। अंडरस्टूड? तो ये जो ई जी वेक्टर आपने निकाला है इसको दूसरी तरह भी तो निकाल सकते थे ना, ई ए करके। और एक ही बात है ना बेटा, एक ही बात है ना। मैंने कहा ना कि शॉर्ट रूट लेना। एग्री? ठीक है जी तो सर। ए ए ओ बी बी जी बड़ा रूट है, ई डी डी एफ एफ जी छोटा है। सर यप। सर अगर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव बी आता एक जगह पे, फिर तो हमारा आंसर पूरा गलत होता, यानी हम साइन चेंज और कर गलत ना सकते होता, हैं। गलत ना होता, गलत ना होता, वो पैरेलल ही ना होते। अच्छा, तो फिर आंसर तो गलत हुआ ना। अगर हाँ ऐसा क्वेश्चन होता कि दैट शो दैट कि ई जी और डी एफ पैरेलल हैं तो आपके आंसर सेम आने चाहिए, साइन सेम आने चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। चलें क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ट्राई कीजिएगा। मैं बड़ा सा सवाल है, मैं इसमें छोड़ देता हूँ, बल्कि ये सारी वर्कशीट ही भेज देता हूँ। जरा ट्राई करो, ठीक है? और फिर मैं इंशाल्लाह कल ओके इसी को सर। कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? ओके। कल क्लास होगी बेटा सेम टाइम, ठीक है? Okay, sir. टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह Allah. हाफिज़ सर। अच्छा, लिसन टू मी, दोज हु आर नॉट इन पाकिस्तान, if you have any time issue, so you will watch some minutes of recording then. Okay, I will be taking class same time, 7 to 8 p.m. Pakistan Standard Time.